So question number 5, a student uses the equator shown in figure 3.1 to obtain the extension load graph of a spring. The weights of the loads are known. The student suspends lots of increasing size from the spring and determines the different extensions produced. Figure is the graph the student obtains. It G. spring G. next is about the limit when to next is all the load eight I got the opposite. 8.5. 8.5 3.1. next is the student string that is 8 and So the limit of propulsion super gonna things are graph. अच्छा सर इसमें क्या आएगा फिर देखिए कि नहीं रीच होंगे ना क्योंकि पैरेलल में
Springs are parallel. So load is five. Proportionalities, man. 7? No, sir. Next question. The table in the length some of the are shown in the table. Complete the table to show all the extensions. सर इसमें वही मल्टीप्लाई करते जाएगा सर वो स्प्रिंग कांस्टेंट वाला लगा कर नहीं नहीं ट्रेंड कोई आते हैं नहीं Friend, they नहीं आते हैं प्लस 35 प्लस जब 35 करते हो तो नीचे भी 35 ही होगा नहीं हाँ हाँ 35 35 35 35 सर इसमें 35 का ही डिफरेंस आ रहा है जी 35 हाँ जी minus सर 3 और 5 है अच्छा हाँ नहीं चलो हाँ the original 150 यहाँ पर भी 150 तो सिर्फ 35 35 प्लस पे करते जाओ तो भी ओह ओह तो the 220 अच्छा श्योर थोड़ा बहुत सही हो
क्वेश्चन कौन से? 6. 150 and 220 ठीक है. Next is calculate the load that produces. When the force when the force is 1 Newton extended हाँ जी. minus, and when the load is x जी. तो 49/35. 1.4. 1 point. जी. Next is the student pulls a load downward from holds and holds it fixed at. Next is have two springs. सर कुछ नहीं सर. So we have two. The load is stationary. Load has kinetic tick in the boxes. How the value of each of the form of energy compares at A and B. Energy stored in the spring. Gravitational potential energy stored. सर वो हेडफोन्स ना ये दूसरे वाले हैं थोड़ा ज़्यादा सर को लगती हैं सर. वो कर ले इसका. सर वो बेसिकली बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ कैंसलेशन करते हैं सर. वो गर्मी होता है सर. जवाब. जी. नेक्स्ट. अब हाँ चेक जी सर करें इसका ये आंसर. हैं. एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग एंड ग्रेविटेशन. अच्छा. बी पर energy stored at in spring would be larger. किसमें G. एनर्जी स्टोर एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लो. A. ये में ना फोर्स ऑफ. हाँ. या. G. नेक्स्ट इज क्वेश्चन Work नंबर. is वर्क hmm. इज डन बाय द स्टूडेंट. द लोड. Law of The law of conservation. conservation of energy states that energy cannot be created and cannot be destroyed. State how this principle applies here. Sir, guess my uh-huh. क्या होना चाहिए. So the energy applied by the student, the chemical energy would decrease, and the spring, elastic spring energy, वर्क. elastic, elastic potential energy will increase. वर्क इज डन बाय स्टूडेंट. So for chemical energy decrease होता है उससे वो decrease होएगा elastic potential energy increase होएगा sorry.
ऐसे लिखते हैं द स्टूडेंट केमिकल एनर्जी केमिकल into This is chemical energy. chemical converted into Elastic potential energy. chemical And energy into और तो chemical energy of chemical और इसके बाद does the total energy when the spring is pulled down work is form of elastic form of elastic energy. का मतलब इलास्टिक ज्यादा हो रही है केमिकल होती है कम Come. हो इलास्टिक ज्यादा हो रही है कम हो रही है Come. टोटल एनर्जी हाँ जी. एक ज्यादा हो रही है दूसरी कम हो गई ओवरऑल द हाँ जी. next is a force is applied to a student solid object may cause it to accelerate that relate to other properties of the object which may when So a shape and force is size. Shape shape and size. volume चलो. spring has a mass of kg the gravitational strength is 10 per kg calculate the weight of the spring 0.12. next b part G. पढ़ें The spring is suspended vertically and a load is attached to its lower end. The spring extends by 2.7 centimeters and does not pass the limit of proportionality. spring is end 7 doesn't pass limit of just one reason why the extension of second spring differs Second. हाँ oh, sorry हैं? नहीं पढ़ा अच्छा. A figure shows a spring and load attached to a lower end of a second identical spring. हाँ. तो सर इसमें ये इसलिए different होएगा क्योंकि the second spring increases the length of the first one. The total length is increased. Sorry. इसमें हम कह देते हैं now load is connected with the
with plus हाँ जी। सेकंड स्प्रिंग है ना, इसने दो चीज़ों को कैरी किया। सेकंड स्प्रिंग होल्ड्स द लोड प्लस स्प्रिंग वन एंड स्प्रिंग वन on just one reason why the extension differs. So since it increases the overall weight. कहते हैं the weight of the first spring, हाँ, weight of first weight of the first spring also increases the extension. So extension क्या मतलब है? so कि फर्स्ट स्प्रिंग का भी तो वेट जो होता है वो उस सेकंड स्प्रिंग को भी पुल नीचे करता है। And the spring one only, while the second लोड प्लस स्प्रिंग। the what is meant by the limit of proportionality So with the extension, it stops being directly proportional. is the point which the extension is not directly not directly proportional. जी। Next, the load in figure 2.1 state the form of energy stretched spring. Elastic potential energy। अपने full tension. जी। Next is the load is released upward and the distance traveled in until the load stops moving. Explain why the load stops moving. Actually, the load oscillates. After a while, stops moving. So since the energy would be finished, since it converts to heat and Why? so due to friction. Thing is oscillating act with surface. Here is this. Question number 8. पढ़े? A student has three springs A, B, and C. He measures the length of each spring in turn. When different weights are placed on the end of the spring of each spring, state which stretched past the limit of proportionality. State which spring has been stretched past the limit of. What's the limit of? So नहीं से ढूंढना होगा। पहले अब से एंड से स्टार्ट कर लेते हैं। बस इन सारों को माइनस कर करके देखना है कुछ शायद नहीं। सर मैं कहता हूँ सी से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड अक्सर एंड पर होते हैं सर। Yeah. सर वही बस ए का वैल्यू निकालना जहाँ चेंज होता है हाँ पता चल जाएगा।
अगर हम इसको चेक करते 1 से 2. 1 न्यूटन का लेंथ में इज 7. 1.6. How force is directly Mhm. So next में भी तो 1.6 का ही गैप आ रहा है। हाँ हाँ, नेक्स्ट में भी 1.6 का गैप आ रहा है। सो हाँ, ऐसे ही देख लेते हैं ना। बी का 10.4 माइनस 8.6। change in length है हमारे पास सर मैं बताता हूँ सर, मैं कर रहा हूँ एक सेकेंड। 11.3 माइनस। अच्छा सी है। how अच्छा मैंने इन सबों का वेट देखा है। जब वेट में 1 इंक्रीज होता है तो ए और बी में वो डिफरेंट अमाउंट्स का वो इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन जब फिर 2 से 3 जाते हैं तो ए एंड बी के सेम अमाउंट से चेंज होते हैं, लेकिन सी के डिफरेंट अमाउंट से हो जाता है। extension -7 5 उससे क्वेश्चन ये लंबा है 0.8। 1.5 सो मैंने भी तो ऐसे ही किया। अब कितना 0.8। लेकिन इससे जब आगे करेंगे तो 0.8 नहीं आता इससे, ये शायद आ जाता है। हाँ, अब 1.8 का आ रहा है। अब यहाँ क्या 1.8। जैसे मैंने भी बस ऐसे ही किया था, लेकिन 1 न्यूटन का गैप लिया ले लेकर। 3 अगर 0.8 ही रहता फिर सेम हाँ जी, और इसमें प्लस डिफरेंट नहीं आया मैंने। से इसका हमने किया तो था 1 पे सेम ही था जी। 3 में कितना मार्क्स का था वैसे ये सर? अच्छा सिर्फ नेक्स्ट है डेटा 3 पॉइंट हाउ यू पार्ट 1 सर, the spring stops uniformly uh, extending, नहीं, कहते हैं
is with load. good. Value same value same higher load. G load. Calculate the unstretched length. अच्छा, ये length G unstretched means the length divided by W2 divided by W. mm, Now G initially they W2 minus W1. Original length is unknown. one Minus minus one again. minus one is n. L2 is 7 point minus. G इसको सॉल्व करें. ये आ गया 1.6 1.6 यहाँ डिवाइड हो गया वहाँ जाकर मल्टीप्लाई माइनस का हो जाएगा माइनस का वहाँ तो वहाँ का प्लस -6.1 -4.5 और भी हमने जी हाँ जी is वही जी सर 4.5 कर. Okay. Next is describe how the student can use the math. कैसे he attach he attach पता नहीं सर rock with spring rock ए and note the note the extension extension. के बाद by comparing extension by comparing extension
Produced. by Produced. of the extension of हाँ जी. the mass of the rock can be of rock determined mass of rock can be determined by mass is W find curve. जी. No sir. जी से. राफिस है.